KKR. All right, as loud as we can. Right. So put your hand on your heart and sing. So put your hand on your heart and sing. Playing for KKR means everything. Playing for KKR means everything. From Eden Gardens to every breakthrough. From Eden Gardens to every breakthrough. It's more than just me and you. It's more than just me and you. We take the blind and guys are going to the land of The celebrations for KKR continue, and after that pumped up anthem by Chrislyn, the celebrations have to continue. But first things first, welcome to a brand new episode of Night Club. Well, this is your one-stop destination for all things KKR. KKR की सवारी आ पहुंची है कोलकाता, बट हम पहले नजर डालेंगे उनके यहाँ तक के सफर पर। बेंगलुरु में आरसीबी को हरा के उन्होंने एक बेहतरीन जीत हासिल की है, एंड नाउ बहुत ही ज्यादा उत्साह और मस्ती के साथ वो घर लौट रहे हैं। After a long drive from the hotel to the airport, we are finally here और हम जा रहे हैं कोलकाता। फ्लाइट बोर्ड करने का समय हो गया है। अब देखते हैं कि फ्लाइट में हमारे नाइट्स क्या-क्या करते हैं। अरे खेलो ना, खेलो ना, खेलो ना। अकेले हो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगाओ। चप्पल तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना, प्यार सजना, प्यार सजना। The idea is to take a word from whatever the person is singing, but you should not give the chance to the other person to sing. मुझको क्या हुआ है? No? हाँ, exactly. That. तेरा वादा रहा प्यार से प्यार का। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से Kolkata. Now it's time for a home stint at the fortress. You know our motto, कोरबोल और वो जीत पूरे। रिलैक्स होने के बाद हमारे नाइट्स का ध्यान गया आज के मैच की ओर। Well, of the 8 games that they've played in all this season, 6 of those games have been away, and they've won 4 away games. Now that is an IPL best this season. KKR का ईडन गार्डन्स का रिकॉर्ड जबरदस्त है, and Kings 11 Punjab definitely know what they're up against. Playing for KKR means everything. Playing for KKR means everything. कोलकाता नाइट राइडर्स लौट आए हैं अपनी डेन में और ईडन गार्डन्स कर रहा है उनका बेसब्री से इंतजार। 6 अवे गेम्स खेलने के बाद अब अगले 4 मैचेस खेलेंगे नाइट्स अपने ही घर में और उनका कोलकाता में सामना होगा पंजाब, गुजरात, पुणे और बेंगलोर से। पॉइंट्स टेबल में केकेआर तीसरे नंबर पर है 10 पॉइंट्स के साथ। प्लेऑफ्स में जगह पक्की करने के लिए चाहिए होते हैं 16 अंक, यानी 3 और विंस, जो कि केकेआर चाहेंगे पूरा करना इन 4 होम गेम्स में। ईडन गार्डन्स में केकेआर के रिकॉर्ड को देखकर साफ हो जाता है कि नाइट्स के लिए ये करना कोई बड़ी बात नहीं है। 2014 से ईडन गार्डन्स में हुए 12 मैचों में केकेआर सिर्फ 2 ही हारे हैं।
यानी विनिंग परसेंटेज है 83 का। ईडन गार्डन्स की पिच लेती है स्पिन और केकेआर की टीम में है बेहतरीन स्पिनर्स शुमार। मनीष पांडे भी आ चुके हैं टीम में वापस। यानी केकेआर के अब एस स्पिनर पीयूष चावला के साथ साथ सुनील नारायण, ब्रैड हॉग और शाकिब अल हसन में से 2 स्पिनर्स को टीम में ले सकते हैं। केकेआर की 2 मेन वरीज हैं। पहली, सुनील नारायण के अपने नए एक्शन के साथ विकेट लेने की क्षमता, लेकिन दूसरी और सबसे बड़ी वरी है केकेआर की डेथ बॉलिंग। पिछले 4 आईपीएल मैचों में केकेआर के बॉलर्स ने आखिरी 5 ओवर में 13.9 की इकोनॉमी रेट से रन दिए हैं, यानी औसतन हर मैच में 70 रन। पिछले मैच में आरसीबी ने उनके खिलाफ आखिरी 5 ओवरों में 73 रन बनाए थे। इस वरी को दूर करना है जाक कालिस और स्विंग किंग वसीम अकरम की सबसे बड़ी प्रायोरिटी। नाइट क्लब की नजर बनी रहेगी केकेआर के प्रैक्टिस सेशन पर, ये जानने के लिए कि कैसे कर रहे हैं नाइट्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व। The Knight Riders will be playing their first home game at Eden Gardens after a long away stint. And to discuss this, we have with us ex-KKR cricketer David Hussey. Well, David, tell us, what do you think the team's composition will be for today's game, given that they are playing at Eden Gardens, their home ground? Hi Sajana, my team for the KKR game against Kings 11 would be unchanged. They played very well against RCB in Bangalore and they need to have a settled lineup for the upcoming home games. But the points of discussion are whether Chris Lynn is replaced by Shakib Al Hassan and George Bradley Hogg comes in for Morne Morkel on the spin-friendly conditions at Eden Gardens. But for mine, unchanged lineup. डेविड हसी के टीम चेंजेस क्या-क्या है ये तो हमने देख लिया, और कैप्टन गंभीर के मन में क्या-क्या चल रहा है ये जानने के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। पर जब हम बात करते हैं सुनील नारायण की, तो उनके मन में क्या चल रहा है? आईसीसी ने उनके बॉलिंग एक्शन को तो क्लियर कर ही दिया, उन्होंने आईपीएल में वापसी भी कर ली है और कैप्टन गंभीर के ये ट्रम्प कार्ड भी है। पर आईसीसी के क्लियर करने के बाद उनके बॉलिंग एक्शन में कुछ चेंज आया है? आइए देखते हैं। सुनील नारायण के आईपीएल में कमबैक की सबसे बड़ी वजह रहा उन्हें मिला केकेआर का साथ। गलत बॉलिंग एक्शन की वजह से सस्पेंड किए गए नारायण के लिए केकेआर ने एक बायोमैकेनिकल एक्सपर्ट की मदद ली, जिन्होंने उनके बॉलिंग एक्शन को करेक्ट किया। जरूर यही वजह रही थी कि नारायण को आईसीसी ने क्लियर किया। It's nice to feel terrific when someone is performing and he's won us games, he's won us championships. You know, I mean, Sunil went through a bit of a rough time and we just felt it was the right thing to do and our responsibility and obligation to make sure that we are standing solidly behind him. And to his credit, I think he has worked extremely hard and you know, anything that we could do to help, we'd continue to do. लेकिन क्या एक नए बॉलिंग एक्शन के साथ नारायण उतने इफेक्टिव साबित होंगे जितने पहले थे? आईपीएल में अब तक उनकी परफॉर्मेंस ठीक-ठाक रही है। बैंगलोर के खिलाफ पिछले मैच के अलावा उन्होंने किफायती गेंदबाजी की है, लेकिन 6 मैचों में उनके नाम केवल 6 ही विकेट हैं। केकेआर के लिए एक बड़ी चिंता ये है कि वो कैरम बॉल जिससे सुनील नारायण बैट्समैन को चकमा देते थे, वो बॉल नारायण अब नहीं डाल सकते। इसलिए शायद विपक्षी बल्लेबाज अब उनके खिलाफ इत्मीनान से स्वीप शॉट खेल पा रहे हैं। इस आईपीएल सीजन में नारायण के खिलाफ बनाए गए करीब 40% रन स्वीप शॉट से आए हैं, जो कि पिछले कुछ सीजन्स के मुकाबले काफी ज्यादा हैं। कैरम बॉल ना डाल पाने के अलावा इसकी एक और बड़ी वजह है और वो है नारायण की बॉलिंग स्पीड। नए बॉलिंग एक्शन के साथ साथ नारायण की स्पीड पिछले कुछ सीजन्स के मुकाबले इस सीजन में कम हो गई है, यानी बैट्समैन के पास वक्त होता है उनकी टर्न को पढ़कर उन्हें खेलने का। ऐसे में नारायण को लेकर केकेआर की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? Look, I think that's where faith and trust is very important. You can't leave people when they're going through a rough time, and that is why we've been very good as well. We've supported players, we've backed players when they've not had the best of time, and he's done some unbelievable things for us. It wouldn't be nice that if we just let him go like that. And I think KKR as a franchise a lot of credit needs to go to KKR as a franchise because they've supported him during that time as well, and now he's coming back. He's coming back, and hopefully he's going to be at his best again because we wanted to get him into this competition. We wanted to actually ease him into this competition. Doesn't want to rush him and doesn't want him to bowl those crucial overs, especially in the first 6 or in the slog overs. So we wanted to ease him because once he gets that confidence, we know how dangerous can he be. कप्तान को पूरा विश्वास है उस बॉलर पर जिसने एक अहम रोल निभाया है केकेआर की सक्सेस में। उम्मीद यही है कि नारायण केकेआर के इस विश्वास पर खरे उतरेंगे।
आइए बात करते हैं डेविड हसी से और जानते हैं कि उनकी एक्सपर्ट राय क्या है सुनील नारायण के बारे में. Well, David, what do you think has changed about Sunil Narayan this IPL season? And as a batsman, what would you think facing the Sunil Narayan of 2016? Well, it's only been a short period of time where he has changed his action and he's probably still getting used to his new action. For mine, he's probably bowling a little bit slow. He needs to really quicken it up a bit and put a few more revolutions on the ball. But so far, he's only had one bad game against RCB where the RCB batsman played him ever so well. But it is a different game at Eden Gardens where Sunil Narayan really dominates Eden Gardens. Well, spoken like a true expert. But David, these Knights were your mates at one point of time. So is there any particular message that you'd like for me to send across? And while I pass that on, I've been spending a lot of time in Kolkata. Is there something that you'd like for me to bring back to you? Maybe your favourite dish? My message to all KKR people is play bravely, be bold and always entertain the home crowd at Eden Gardens. And if you've got a chance, please slide me in some rasgulla, delicious, delicious dessert. I am KKR. Korba Lorba Jitpore. All right then, Korbo Lorbo Jeetpore. But this Jeetbo factor would have been missing in the last game had it not been for the Kolkata Knight Riders' devastating duo, Andre Russell and Yusuf Pathan. They're very similar cricketers in terms of what they do for the Kolkata Knight Riders, but we were surprised to see what they're like off the field. पहले तो congratulations आपके smashing innings के लिए कल. आपको कैसा लग रहा है मैच के बाद? ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है. इतना अच्छा मैच हुआ. मैच जीते सबसे बड़ी बात है. पॉइंट टेबल पे 1-2 पॉइंट और हमें मिले तो वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है और बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. आपकी पार्टनरशिप आंद्रे रसल के साथ हमेशा बहुत ही अच्छी रही है. पर पिछले साल लोग कहते थे कि आप एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते हो ऑन द पिच. इस साल क्या बदला है? नहीं, बिल्कुल ज़्यादा बात अभी भी हम लोग नहीं करते. हम लोग दोनों बस इतना ही बात करते हैं कि अपने शॉट्स को बैक करना है, अपनी एबिलिटी को बैक करना है और शॉट्स खेलते रहे. बस उतनी बात होती है. हाँ, ये बात सही है कि ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन इतना हमारे लिए बहुत है. एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि अगर 2 बॉल या 3 बॉल डॉट हो गई तो हम लोग दोनों को पता है कि हम लोग को क्या करना है और वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं हमारे लिए. तो बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी नहीं है विकेट पे. Well, the thing is, I don't like to say much when I'm in the mood to like go at every ball. And Yusuf is similar. So that's the reason why I love to bat with a guy like that. I don't like to be getting technical. Oh, we're going to look for singles, we're going to this. If the single is there, we get the singles. If the boundary is there, we get the boundaries. We can't get singles needed, 113 from 57 balls. So I think it's safe to say that you and Yusuf have an unspoken bond. That kind of, you have telepathic connections that are going on the field. Yes, I think so. And as I said, talk less, more, action more. 2014 में जब अयान पैदा हुआ था तो आपने एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करी थी और इस साल भी आपका एक बेटा पैदा हुआ है. तो इस जो आपने कल परफॉर्मेंस दी, क्या उसका कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस है? क्या चाहती है आपके मैं हर साल एक बेटा पैदा करूँ? नहीं, देखिए, जब आपके लाइफ में नए लोग आते हैं और आपकी लाइफ में हमेशा वो अपना जो भी पॉजिटिवनेस और जो अपना लक है वो लेके आते हैं आपके लिए. तो मैं आई थिंक लकी हूँ कि दोनों बेटे जब भी आए तो मैं अच्छे से परफॉर्म किया है और अच्छा और डे बाय डे अच्छा कर रहा हूँ मैं और डे बाय डे कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ. ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि दोनों बेटे मेरे लिए बहुत लकी है. एक सफल टीम की यही निशानी है कि हालात चाहे कुछ भी हो, कोई ना कोई हीरो बनकर इस टीम के लिए उभर ही आता है. And the people putting the hard work and dedication behind the Kolkata Knight Riders are the support staff. Let's see what they had to say. This is the team behind the team. 2011 was this big watershed year for KKR, isn't it? Big change. Jacques got picked up in the auction, Yusuf Pathan did, Gautam Gambhir did. There's a coming together happened in 2011. What is the thinking behind putting that together? When we actually went to the auction, we really didn't know what to expect because we had taken a fairly significant decision to go and rebuild the team at the auction, which means we didn't retain anyone. And with there was a lot of preparation that went into it, but element of luck as well. For us the first player who was featured in that auction was Gautam Gambhir, and we were fortunate to be able to pick him up. And we had always thought of him as our captain material and candidate. And frankly, from there, when we got Jacques, we said, this is a nice core that's building up,
And we're fortunate to be able to build around them, and it's been great so far. You know? I've talked to Venki a lot about you, Jacques, and I don't know if he's told you that, but I think your CEO is a bit of a fan. Yeah, I think it works both ways. Yeah, it's been a great relationship, since the day that I joined KKR, and a lot of teams speak about a family and that type of stuff, and a lot of it is just hearsay. But I can genuinely say that that's the one thing that stands out for me about KKR is the closeness, and it really is a family. And like I said, it's not just saying it; it really is. I mean, you've played so much cricket all around the world, whether it's just South Africa, whether it's domestic cricket in South Africa. You played franchise cricket in Australia. Is something different about KKR for you? Because you've been here now, what, 5-6 years in different roles? It is. Like I said, the family part of it. We spent 2 months here, so if you're going to spend 2 months together and not enjoy each other's company, it's going to be a long 2 months. And I can honestly say, the 2 months fly past here when we were with Kolkata. It's fun. The guys interact with each other off the field. We're unbelievably well looked after as players and coaching staff. As much as the playing part of it is important, off the field stuff is really important. And I find that KKR take care of the little things which at the end of the day make a big difference. Each team's got their guy that is sort of the funny guy, the prankster, and you need those type of guys in a dressing room to when things aren't going well, to lift the spirits, and when things are going well, to keep the spirits going. I think it's interesting he uses the word relationships. We talked on an earlier program, Gautam Gambhir talked about that as well. Now, when you came to know that the great man isn't going to be playing for that much longer, you ensured that he was going to be part of KKR, didn't you? No, absolutely. I think for us, that was the greatest pleasure in terms of the transition. And I'll quickly mention something to you, because Jacques is a man of very few words. But whatever he says, everyone latches on to. When you score as many runs and take many wickets, you don't need to talk, And that's one of his great qualities. But I was having a conversation with him when I was in Cape Town for his foundation, and we had a chat about what next. So he asked me a simple question. He said, "So supposing I go into the auction, does that mean that I might end up playing for some other franchise?" I said, yes, that possibility is always there, because you sign up to play for anyone. He said, my decision is made. If I'm going to play, I'm playing for KKR. Otherwise, I'd rather be part of the setup. And so I didn't know what to say, but it was overwhelming. And it's been a fabulous transition. And if I may, I should say that players have humorously commented that they've heard more from Jacques in the last couple of weeks than in the last 5 years when he was a player. Is that what being a coach does? Does it mean you've got to speak a lot more? Yeah, I suppose so. But there's an old saying, less is more. So, but yeah, you obviously got to speak a little bit more as a coach. But I've enjoyed that part of it. I really have enjoyed the coaching part of it. Sort of towards the latter of my career, when you're a senior player, you're passing off the knowledge and trying to help the youngsters coming through. And I suppose from that point on, I realised how much I enjoyed passing on a bit of information and seeing how that information helps someone's career grow. When great players become coaches or captains, there's a tendency to say, that's how I would have done it, because you have done it so many times in the past. Is there a feeling, listen, all you guys, this is how you do it? No, not at all. I think coaching has changed completely. Batting techniques, bowling techniques, all of that has changed. And the danger is to have the in my day, and I always said, having heard a few players say in my day, and that's how it was done when we were, I promised myself I would never say that, and hopefully I've stuck to that so far. But you've got to treat each guy individually and pass on the knowledge that you can. And cricket's moved forward. It's like any other sport. Players today are so much better than yesteryear players, and it's going to keep moving forward. Guys are training better. They've got more offered to them. All that kind of stuff. So you just got to move forward with the times. It's a matter of handling each individual, differently. I think gone are the days of one rule for all. You've got to realise that each human being is a different individual, and you've got to handle them differently. Some you've got to push a little bit more. Some you just got to hold back. So yes, it is. It's a lot more. I think coaching's more about management these days and getting the best out of each player, rather than saying get your foot to the pitch of ball and that kind of stuff. I mean that stuff takes care of itself. So getting the player in the right space and giving them the right environment to perform to their full capacity is probably as important as anything else. On a lighter note, given that he's a man of few words, if Jacques Kallis were to invite Sunil Narayan for a meeting to talk about what they're going to do, it probably lasts a minute and a half, won't it? Because he speaks about 3 words a fortnight.
But you know, I mean, you're absolutely right about how brevity and being very specific. But what I've admired really is the fact that Jacques always, when he talks to the players, is always talking about the mental side of the of the game. By the way, what have you done to Gautam Gambhir, the two of you? I've never seen him more relaxed. He's smiling a lot. He's laughing. We played him a clip here, and he was throwing his head back and laughing. What have you done to him? I suppose it comes a little bit of age. Yeah, he's been magnificent, even over the years. You know, he's a very intense cricketer, but for some reason this season he seems to be a little bit more relaxed and enjoying his cricket, and the results have shown that. But what a fantastic leader he's been, not only on the runs he scored on the field and what he does on the field, but you know, behind the scenes stuff that people don't get to see. You know, often people, when they go through a bad patch in a team, get criticised for not scoring runs or taking wickets on the field, and they don't see what happens behind the scenes, what work he's putting in behind the scenes, helping other guys. So you know, it's great to see Gauti having a good season and continuing the work that he does off the field. ये तो बस एक छोटा सा इंटरव्यू था जो हमने जैक कालिस और केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर के साथ किया था. टू वॉच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट इंटरव्यू यू मस्ट स्टे ट्यून्ड टू द नाइट क्लब. बट टॉकिंग अबाउट उमेश यादव, आफ्टर अ डिसहार्टनिंग परफॉर्मेंस इन द लास्ट गेम, वो पूरी मेहनत और लगन के साथ जुट गए हैं ताकि वो सबकी बोलती बंद करे. बट कोई ऐसा है जिन्होंने उमेश यादव की ही नहीं बट कप्तान गौतम गंभीर की भी बोलती बंद कर दी है. कौन है वो, आइए देखते हैं. Practicing my tongue twisters. चलो लेट्स गो. नहीं एक बार देख लो यार, पूरा क्या है. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची पीतल के ओके. ऊंट ऊंचा, पूंछ ऊंची. पीतल के पतीले में चंदू के चाचा ने चांदनी रात में पीतल के दुबई में डूब गया. ये इजी है. पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात की चांदी. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को पीतल के पतीले में पपीता पीला 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 पीला. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चमची से चटनी चटाई. पीतल के पपीते में पपीता पीला पीला. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चमची से चटनी चटाई. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को आई एम नॉट श्योर कि मैं ये कर पाऊंगी. Hats off to our boys for pulling that one off. But speaking of challenges, I have a rather interesting one for our boys on today's edition of KKR का Boss Con. केकेआर का बॉस कॉन पे आपका स्वागत है. आज हमारे साथ है अंकित और उमेश और हम जो चैलेंज करने वाले हैं उसका नाम है क्रिक पार्टी. आप दोनों बॉलर्स हो तो हमने एक चैलेंज डिजाइन किया जिसमें हम क्रिकेट बॉल का यूज करके गोल्फ क्लब्स के साथ उन बॉटल्स को गिराएंगे. आप लोगों के पास 3 चांसेस हैं और देखते हैं ज़्यादा बॉटल्स कौन गिराएगा. पहले हम छोटा सा पिच रिपोर्ट करते हैं क्योंकि हमने एक बहुत सही सा पिच बनाया है. तो पहले डिस्कस करते हैं कि बाधाएं क्या आएंगी इस चैलेंज को कम्प्लीट करने में. चले, क्या लगता है ये जो यहाँ पे क्रैक है? आई डोंट थिंक कि क्रैक से कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, बट प्रॉब्लम मुझे लगता है हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी बॉल को मिडल करने में. एक्चुअली हम लोग फास्ट बॉलर है, नॉट अ बॉल प्लेयर, तो क्या थोड़ा बहुत तकलीफ होगा कि मिडल लगेगा नहीं लगेगा, वहाँ तक बॉल पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा. सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बस वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट. सो लेट्स सी. तो अच्छा ठीक है, तो शुरू करते हैं. कौन जाएगा? रमेश भाई सीनियर. ठीक है. So far, Umesh has had 2 chances and none of the balls have fallen, but they've been pretty close. So last chance. Now it's Ankit's turn, so let's see what happens. बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ट्रिकी चैलेंज के बाद हमारे आज के विनर है अंकित. कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मैं अपने सीनियर उमेश भाई को हरा के मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है. आपको कैसा लग रहा है? वेरी सैड. मैं जूनियर से हारी है, बट ठीक है.
कोई नहीं, चौहान उमेश भाई, अपने जूनियर का कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए हमेशा। प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि मुझे अपनी बॉलिंग पे हार्डवर्क करना चाहिए, ना कि इस पे। तो नेक्स्ट टाइम पर थोड़ी बहुत तो करूँगा, बिल्कुल करनी चाहिए। क्रिकपट चैलेंज में बने अंकित राजपूत हमारे आज के KKR के बॉस। एंड दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू ऑन टुडेज एपिसोड ऑफ द नाइट क्लब। अब से कुछ ही समय में ईडन गार्डन्स अमी KKR और कोरबो लोरबो जीतबो की आवाजों से गूंज उठेगा। If you want to ask questions to our experts, do not forget to tweet using #nightclub. That's all we have on today's episode. Do not forget to catch Night Club on every KKR match day. Goodbye. So put your hand on your heart and sing. So put your hand on your heart and sing. Playing for KKR means everything. Playing for KKR means everything. From Eden Gardens to every breakthrough. From Eden Gardens to every breakthrough. It's more than just me and you. It's more than just me and you. We time to play the games are going to better than our club. I mean, kick it.